Am I audible? Yes, sir, you're audible. Yeah. Okay. So, mm, C++ is a platform dependent, Java is platform independent. With C++, there is some limitations for that by using the memory allocation and all those stuff. But with Java has a garbage collection, so it's don't occupy that much memory as compared to C++. So there's no chances of system hang or crash. Mm-hmm. Okay. um, with Java, with the help of Java, we can develop not only the desktop application, we can develop the web application and all those stuff, as Java is open source and has lots of big library to use as compared to C++. Okay. Yeah. Only that this things is in top of mind. There is more difference, but it's not in my mind right now. Okay. Good. Uh, this is the better. Shraddha? No. Hello, sir. Yeah. What is the difference Uh, between C++ and Java? Java is a platform independent. It works on bytecode, and C++ is a platform dependent. Okay. C++ is a compiled language, and Java is a compiled and interpreted language. Mm-hmm. Okay, that's Okay. Cool. So again, let me revise in minutes. Okay. So there is a big difference in between C++ and Java. Okay. That is the memory management. Okay. By using the developer can manage the memory through the manual stuffs by using the delete keyword to delete the resources, okay, whichever occupy the resources in the memory. So that stuff we require to manage through the keyword. But in the Java, there is no recommendation to manage the manually memory management, but definitely JVM will manage those things so that most probably will not chance to overload the memory and crash the system. That thing will not happen in by if you develop the application by using the Java. But in the C++, there might be the chances to crash the memory. As you know, yesterday we saw that thing when we ran the application. In that case, there was the stuck my system and get crashed, okay, due to the uh, resource management, because we did not manage the resources manually, right? So that thing happened in the last session. I will give you the stuffs like basic things. Okay, you can write down the notes for it. Let me show my screen. If you know, you can see my screen. Is my screen visible, guys? yes, sir. Okay, cool. Yes, sir. Okay. Uh, Here is the difference. Let me differentiate first.
CPP, or we can say C++. You can take a running note, guys. So C++ is a like first point. We know it's a procedure procedural language. Okay, language. There are like function a lot of functions. Okay, we can call this function. So we can say that is the procedural language and object oriented language. Okay, object oriented language. Okay, let me remove this. I want table. Allow me a moment. To differentiate table. Okay, you can take this. Okay, so C++ and yep, Java. Okay, the first point, we can say the procedural language and procedural and object oriented programming language. Object oriented programming language. But Java is not an procedural language. Procedural language. Language. It is only object oriented programming language. Okay, it is only object oriented programming language. What is the next difference? What is the next difference? We can say C++ can compiled 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 to machine code. Okay, compiled to machine code and generate and generate generate the .exe file and this file is only for Windows. This file will work on Windows operating system. Okay, this will work on the
Windows operating system. Let me add what happened? Something. Okay, I'm not able to add. Okay, now I will try. Okay, sorry. Sorry guys. So Java is the, we can say, compiled compiled to bytecode, bytecode, and and that is that Sir, yeah. screen is not visible. Oh, so let me share my screen again. Thanks. Uh, is my screen visible, guys? Yes, sir. Okay. Yeah. So Java is the compiled to bytecode, and that is run on JVM, right? That is called Java Virtual Machine. Java Virtual Machine. This is the second and biggest difference. Third, CPP is the platform independent independent programming language. Programming language. Because this because it work only on the single operating system. Single operating system. But Java is the platform platform independent independent programming language, because because it will execute on the or execute or run on the any other operating system. OS in the sense operating systems. Fourth difference. Java, C++ manage manage the memory manually by developer, right? By developer, like using delete new or delete delete keyword, right? Delete keyword. But Java Java is manage manage the memory memory automatically automatically using JVM and its garbage collector garbage garbage collector
Okay, that is called GC. But also we also developer can manage the manually by using system dot cc method. Okay, so JVM by default will manage the memory automatically, but also developer can also manage the like memory management through the GC, or means we can like and other and other mem memory tuning. Okay, so memory tuning and performance skill. Okay, performance skill. Next, CPP, C++, CPP supports pointer, right? Support pointer, but Java did not support pointer, right? You know why, guys? Why Java will not support the pointer? Anybody? Guys, am I audible? Guys, am I audible? Yes, sir. Yes. Why Java will not support the pointer? Anybody can tell me about that? Explain that. You forget it, right? Okay, so I will mention here in a single line. You can keep it in mind. Because 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 of the security, safety and security. Because of the safety, you can say safety and security purpose, or because of for the because of the security and safety. Why? Because like whenever like programming has interact with the hardware, so pointer will directly allocate the memory of the machine level. So that might be the reason. Okay, so Java will not support for that purpose. तो जावा क्या, इसीलिए हमारा जावा जो भी हमारा पॉइंटर है, ओके, पॉइंटर वेरिएबल को यूज नहीं करते, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल यूज करते हैं। ओके, तो हमारे पास ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है, गार्बेज कलेक्टर है, तो वो पूरा हैंडल करता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। सो अगर हम पॉइंटर यूज करेंगे इन द सेंस, सो उसमें क्या होगा कि तुम्हारा पॉइंटर डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा मेमोरी के, तो उसमें चांसेस है कि बग्स हो सकते हैं कि मेमोरी लीक के। ओके, माइट बी द चांसेस चांसेस ऑफ memory memory leak, so that's why Java did not support pointer. Okay. There are a lot of things. So this is the design philosophy. Okay, this is the this is the design philosophy. Okay, you can say design philosophy. This is the design philosophy.
Next, next. Other thing, you can say, like C++ directly executed on machine. I think this point has done. Okay, no, directly executed on machine level. Java will execute on JVM. So, and due to this, due to this, due to this, C++ C++ is faster than Java, and so due to this Java slightly slower than C++. Last point, seventh, by using C++, we can build the core application for Windows level or Windows level. By using Java, we can develop the web application, desktop application, or mobile application, desktop application, mobile application, and IoT application. IoT application means that are the C level. Got it? Uh, this is the difference, okay? Key difference between the like C++ and Java. Okay, understood? क्या समझ में आया है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, cool. You can write down or let me know if you once done. Able to see? Done, guys?
अगर लिख कर हो गया तो बता दीजिए। Done, sir. ओके, अदर क्लोज कर दो ये विंडो गाइस, अदर कैन कंफर्म। Yes, yes, sir. Okay, okay. So let's move ahead for the next thing. Let me create the project. Okay, so today, now we will see the first program of the Java. Okay, we'll see the demo too. Let me create it. Let's see. Okay. So everybody know this is the Eclipse. I hope everybody knows about the installation and everything. Okay. No need to install all those things. Already I shared the information in the group. So you should have to install the any of the IDE. Okay. तो हमें क्या जरूरी है? So we required the JDK version. So you can install the any JDK version. I already installed the JDK version. Okay, in my machine. So for that purpose, you can download the JDK first. I will show you where you can download the JDK on from the official site. JDK, okay, 21. Okay, right now we are most probably using the JDK 21. You can see Java AC version. तो हमें क्या करना है फर्स्ट, अगर हमारा जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो वी रिक्वायर्ड first JDK, means not JRE, JDK is required. So this is the official site. You can download the JDK uh, as you comfortable. You can I will recommend it to only use the IC 21. तो हमें JDK 21 डाउनलोड करना है. You can choose the JDK as per your operating system. Might be Windows. If you have Windows operating system, then we have the Windows installer. Okay. अगर आपका 64 bit का operating system है तो you can use this. और 32 bit चाहिए तो 32 bit का आप use कर सकते हो. तो मोस्ट प्रोबेबली अभी के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो 64 बीट है, तो आप 64 बिट का डाउनलोड कर सकते हो जेडीके. ओके, दिस इज द exe फाइल. इफ यू वांट exe फाइल यू कैन डाउनलोड. दूसरा भी ऑप्शन है, यू कैन चूज द कॉम्प्रेस्ड आर्काइव फाइल. तो ये आर्काइव फाइल तुम्हें डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी. देन यू शुड हैव टू सेट द पाथ इन सिस्टम. Okay, so I will not going to download this. I already downloaded and install. But for the demonstration purpose, let me show. You can click and download from here. You will able to see this JDK version to okay 21 21.0.10. That is the latest one of the 20 one, and you can see other versions are also there. So you can download this version, and once you download you can click on this exe file. This is for the Windows, and you can see this window you will be able to see. Then you can click on the S. अगर आप S के ऊपर क्लिक करते हो तो then you can see something like that. तो
तुम्हें ये ऑप्शन आएगा, you can choose this option. Where is this? Okay, so then click on the next button. You can see, okay, the path where it will be get installed. तो ये हमारा जहाँ पे इंस्टॉलेशन होगा उसका पाथ रहता है मोस्ट प्रोबेबली सी फोल्डर के अंदर, सी ड्राइव के अंदर हमें इंस्टॉल करना है। तो सी ड्राइव, जावा, देन जेडीके का वर्जन। You can click on the next. You can see the progress bar. Okay, let me check, it might be already installed. Okay, yeah. Okay, so the following application using that updated setup, close the application, click and return, continue, because ये अभी इंस्टॉल नहीं होगा, ऑलरेडी वी हैव, तो हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है जेडीके का, तो नॉट रिक्वायर्ड। जैसे भी तुम्हारा जेडीके का इंस्टॉलेशन होता है तो तुम्हें क्या करना है, इफ यू वांट टू सी, तो you can go inside the C drive and you can check your JDK installed or not in the program files. ओके, और देयर इज द फोल्डर जावा। तो यहाँ पे क्या है, जावा का फोल्डर है। तो लेटेस्ट के अंदर हमारा लेटेस्ट वर्जन है, और 21 जो जेडीके 21 अभी मैं इंस्टॉल कर रहा था, दैट ऑलरेडी हियर, एंड आल्सो आई हैव द अनदर वर्जन्स। तो तुम्हें जितने वर्जन चाहिए, जो चाहिए तुम्हें कंफर्टेबल है, तो वो तुम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो जावा 1.8 भी तुम इंस्टॉल कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, अगर 7 के कुछ फीचर चेक करने हैं तुम्हें तो बिफोर जावा 8। ओके, सो दैट थिंग, बट you should have to install even one JDK version in your machine before starting the Java program. So यहाँ पे जैसे इंस्टॉल होगा, then we required path setting. So you can see system path, system or environment variable. You can directly type, yeah, okay, env environment, okay, environment variable, that is system environment variable। ओके, तो सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल में तुम्हें जाना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर, एंड देन यू कैन सी हेयर, तो यहाँ पे तुम्हें पाथ सेट करना है। इफ यू कैन सी द पाथ, वेरिएबल पाथ, सो यूजर वेरिएबल एंड सिस्टम वेरिएबल। ओके, यूजर वेरिएबल में होता है हमारा पाथ, देन सिस्टम वेरिएबल में होता है उसका होम, जावा होम का। तो लेट्स, यू कैन सी यहाँ पे मैंने जेडीके 1.8 बाय डिफॉल्ट सेट करके रखा है। ओके, सो आई एम वर्किंग ऑन इट, एंड अगर तुम्हें एडिशनली चाहिए जावा 21, तो भी तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नो वरी अबाउट इट, इफ यू वांट यू कैन कॉपी द लाइक लोकेशन एंड यू कैन डायरेक्टली पेस्ट द लाइक वेरी डिटेल्स हियर, ओके, एज अ वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर तुम्हें करना है तो वी कैन, आई कैन शो यू। सो लेट्स, यू कैन ऐड दिस पाथ ओनली, यहाँ तक कि हमें क्या करना है, जेडीके का वेरिएबल पाथ सेट करना है। ओके, ऑलरेडी आई एडेड फॉर जे 8 एंड नाउ एडेड फॉर द, जस्ट क्लिक ऑन दी ओके। तो ये क्या होगा, तुम्हारा जो यूजर के लिए वेरिएबल पाथ है, जहाँ पे तुम्हें एक्सेस करना है कमांड लाइन पे, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट होगा, वहाँ पे तुम्हें जावा का वर्जन एक्सेसिबल होगा by using this path। And also you can set the path, already I have set the system variable path for the Java home, and if you want additional path, okay, so I will add new one, Java 21 home। Okay, you can set this variable like this। okay, then you can see, अगर तुम्हें कहीं एक्सेस करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम वेरिएबल ए एक्सेस करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जावा 21 का जो
पाथ है एक्सेस होगा तुम्हारे सिस्टम में, सिस्टम के अंदर। दैट्स इट। अगर ये जैसे भी होगा, अपडेट करके तुम उसको ओके करना है, देन you can click on the OK, and you can check the version cmd. You can type the cmd and go inside the cmd and check the java hyphen hyphen version. You can see the java 21, राइट। हमने क्या किया है, ये पाथ सेट किया है जावा वेरिएबल का, इंस्टॉलेशन हो गया हमारा। देन we set the system and your system variable and user variable path by using the environment variable setting। okay, that's it। तो अभी अगर ये तुम्हारा हो गया यहाँ पे, तो you are able to compile your program। okay, you will be able to compile your program like this। java c is a compiler। you can write this command, just type this command, and you can see the options. There are a lot of options for the java compiler. Whatever you required, you can use those। okay, as of now we are not using this much। okay, so that is not recommended, but अगर आपको देखना है तो you can see all those supported parameters arguments for this java c, right, for the java c। सो यू कैन सी फर्स्ट एट द रेट फाइल नेम। तो हमारा जावा से जब भी हम जावा कंपाइल करेंगे, तो जो भी जावा का फाइल कंपाइल करते हैं तो जावा सी, और उसके आगे हमें क्या देना है, हमारा फाइल का नेम। तो आई विल शो यू हाउ कैन वी कंपाइल। फर्स्ट वी विल create a simple application, okay, by using the IntelliJ। so nobody like implementing or using the okay, like notepad। earlier we use the notepad plus plus and write the program there, but right away right now most trend is using the any IDE, so that's why we are using we are going to use the IntelliJ now। so sir, how can we use the IntelliJ? You can like guide similar thing, you can follow the same thing here। I will give you the in short okay uh, procedure। so you can download the IntelliJ IDE from the official website JetBrains। okay, JetBrain, and JetBrain will allow the there are two type of like IntelliJ, so that community edition and like ultimate edition। so we are not going to use the IntelliJ IDE ultimate edition। ultimate edition in the sense this is the paid subs okay, we need to subscribe, बट हमें क्या करना है, फ्री वाला यूज करना है। सब्सक्रिप्शन बहुत महंगा होता है, उसका बहुत चार्ज है, उसमें बहुत सारे फीचर आते हैं, बट वी विल नॉट रिकमेंडेड टू दिस। you should have to use the only community edition। let me check। you can download from here zip like exe file, or फॉर द ARM 64 बिट। अगर किसी का विंडोज का अगर ARM 64 बिट का विंडो है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यू कैन यूज दिट। और दिस इज द वे यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड फ्रॉम हियर, एंड यू कैन सी मैक ओएस फॉर द मैक ओएस। अगर मैक ओएस के लिए चाहिए तो तुम ये यूज कर सकते हो, एंड देन तुम्हें अगर लिनक्स के लिए चाहिए तो लिनक्स के लिए भी तुम ये यूज कर सकते हो। टार और जीजेड फाइल रहते हैं वहां पे, तुम्हें एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं। तुम्हें अगर ऐसे से नहीं मिल रहा है IntelliJ, so you can see the IntelliJ ID community edition। directly you can download the community edition from here as well। same thing यहीं पे आएगा। then प्रीमियम के लिए अलग रहता है, और अल्टीमेट के लिए नॉर्मल तुम्हारा कम्युनिटी एडिशन। तो कम्युनिटी एडिशन मैंने डाउनलोड किया है ऑलरेडी, so that's we are going to use now। so next till now do you have any question guys? No, sir. okay,
So now we are going to start the our first Java program. Okay, so let me start demo class. This is the class. तो हमने ये पैकेज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाता है, तो पैकेज बाद में हम पढ़ने वाले हैं, बट फोकस ऑन दिस पार्ट गाइज, फर्स्ट प्रोग्राम। तो क्रिएट कैसे करना है, यू कैन गो इनसाइड इट, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आना है, देन एसआरसी के अंदर मेन जावा, अगर तुम्हें पैकेज चाहिए तो यू कैन यूज द पैकेज, इफ नॉट, नॉट रिक्वायर्ड। आई विल सपोज मुझे पैकेज नहीं चाहिए, ओके, आई विल डिलीट दिस, डायरेक्टली क्रिएट विल क्रिएट द क्लास इनसाइड द जावा। बट ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो हमारा इंटेलिजे का स्ट्रक्चर है। Without structure we can do as well, okay, but inside the IntelliJ the by default folder structure will be designed, and while creating the our project, तो हमारा एक separate project हम बनाए तो उसमें ये सारा चीज by default आ जाता है। So then this is the class we created right now। तो हमें जावा का प्रोग्राम क्रिएट करना है, तो we have to right click on and you can choose the Java class, okay, don't create the Kotlin class or any other class, okay। क्या होता है गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे आते हैं, लाइक न्यू क्रिएट करते हैं, क्लास की जगह कोटलिन क्लास करते हैं, सर मेरा प्रोग्राम ही नहीं चल रहा है, ओके, दैट विल हैपन विथ यू एज वेल। कभी कभी बाय मिस्टेकली भी हो जाता है, बट वो समझ में नहीं आता है कि तुम्हारा क्लास बना है बट वो चल नहीं पा रहा है, दैट वुड बी द प्रॉब्लम। तो हमें सिंपल क्या करना है, जावा क्लास क्रिएट करना है, जावा क्लास क्रिएट करना है। तो जावा क्लास क्रिएट करके एक हमारा बनता है स्ट्रक्चर, ये क्या है, हमारा एक जावा का एक क्लास का स्ट्रक्चर है। देन इसके अंदर हम हमारी मेन मेथड लिखेंगे, ओके, जावा शुड हैव मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। I will explain everything, don't worry about it. So see, just I am defining, I want to run this application, so that's why I will just create one simple logic in this scenario. So we'll not going to show the like hello world program, okay। so यहाँ पे हम hello world program नहीं करने वाले हैं, एक सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं, इनपुट लेते हैं, ओके। सो इनपुट लेने के लिए हमारे पास क्या है, एक स्कैनर नाम का क्लास है, ओके, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर, देन सिस्टम, सॉरी, सिस्टम डॉट इन, ओके, सिस्टम डॉट इन। डोंट वरी, ये क्या है क्या नहीं मैं आपको बाद में समझाता हूँ, ओके, इसकी अभी टाइम नहीं है, बस हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है जो कि हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसके बारे में जानेंगे पहले। सो लेट नाउ, so just I will like print something, system, we can say, you can directly use the shortcut is out, okay, is out in the sense system dot out dot println, is out अगर लिखोगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली system dot out dot println आता है। तो यहाँ पे हमें देना है एक सिंपल, हम एक सिनेरियो लेते हैं, ट्रांजैक्शन, ओके, हमें क्या करना है, एक सिंपल एक ट्रांजैक्शन अमाउंट, मुझे क्या करना है, एटीएम से कुछ वैल्यू, एटीएम से मुझे अमाउंट विड्रॉ करना है। सो इंटर 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 ट्रांजैक्शन अमाउंट, ओके, ट्रांजैक्शन अमाउंट, ओके, आई वांट टू एंटर द ट्रांजैक्शन अमाउंट। जब भी हम यहाँ पे जाते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें
एक सिंपल फ्रॉड चेकर लगाना है हमें। फ्रॉड चेकर लगाना है कि अगर तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो बार बार वही तुम क्या कर रहे हो कि अगर 10,000 अमाउंट है तुम्हारे कोई किसी के अकाउंट में, और क्या करते हैं जो हैकर होते हैं, और ट्राई करते रहते, कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहते कि अमाउंट अगर 10,000 है तो 20,000, 50,000 या फिर 10,000, ऐसे सिमिलर अमाउंट कंटिन्यूअसली ट्रांजेक्शन का ट्राई करते हैं हैक करने के लिए। चाहे तुम्हारा एटीएम सिस्टम हो, या फिर चाहे तुम्हारा ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन हो, इन दैट केस इट माइट बी सम फ्रॉड डिटेक्शन। तो हमें अगर ऐसा फ्रॉड डिटेक्शन क्रिएट करना है, तो एक सिंपल सा सिनेरियो ले रहा हूँ मैं उसी का, जो लेट्स इंट अमाउंट। ओके, मुझे क्या करना है, अमाउंट लेना है फ्रॉम द इनपुट। तो मुझे इनपुट लेना है नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट, नॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट। तो मैं एक इनपुट ले रहा हूँ बाय यूजिंग दी नेक्स्ट इंट, एंड मुझे यहाँ पे जैसे ही मुझे इनपुट आएगा, तो आई वुड लाइक टू चेक द इनपुट, मीन्स वैलिडेट इट। आई वांट टू वैलिडेट इट। इफ अगर मेरे पास अमाउंट है, अमाउंट अगर ग्रेटर देन 80,000 है, ओके, 80,000, तो मुझे क्या करना है, so it should be high amount transaction. I want to give the warning, sys out, okay, in that sys out, and I want to give the warning, warning high amount, okay, high amount transaction, amount transaction, high amount transaction first, else, okay, अगर नहीं है, नहीं है, तो क्या करूंगा मैं उसको, this transaction looks normal, okay, else, else transaction looks system.out.println transaction looks normal। क्या हो रहा है, ये अगर मेरा, और भी कंडीशन लगा सकते हो इसके अंदर, बट जस्ट दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, जस्ट अंडरस्टैंड द सिनेरियो, देन आई विल क्लोज द स्कैनर, scanner dot close, there is a function in the scanner class, so that I called, मैं ये क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को, मीन्स स्कैनर को क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ। जैसे भी मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, तो वो होने के बाद मैं उसको उस इनपुट वाले क्लास का जो फंक्शनैलिटी है उसको क्लोज कर रहा हूँ, क्लीन कर दे रहा हूँ कि बाबा अभी तेरा काम नहीं है, क्लोज हो जाए, बंद। जैसे कि हम डोर ओपन करते हैं, अगर हम डोर ओपन करने के बाद एंट्री करते हैं घर पे, या फिर अगर बाहर जा रहे हैं हम, डोर ओपन करके बाहर जाते तो डोर लॉक करके जाते हैं। वैसा ही यहाँ पे सिस्टम है, जैसे भी अगर इनपुट आउटपुट तुम परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी तुम वैल्यू ले रहे हो और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो तुम्हें उस के क्लास को क्लोज करना होता है, मीन्स इनपुट आउटपुट वाले। ओके, सो लाइक दैट हमारा क्या है, इन एंड आउट है। तो जैसे भी हम एंट्री करते हैं, ऑफिस में हो या घर में हो, डोर के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपरली क्लोज करते हैं। वैसे इसको क्लोज करना है, मत भूलना। ओके, इट इज अ गुड हैबिट। अगर उसको ओपन रखोगे तो कोई भी आएगा घर में, अगर यहाँ पे तुम उसको ओपन रखोगे तो तुम्हारा मेमोरी लॉस हो सकता है। सो दैट इज द थिंग। तो लेट्स run this program, let me run this program, and I will show the result। Okay, so I will enter the amount 80,000, right? Then enter. Transaction looks normal, right? If amount is greater than, okay, so this is not greater than, so that's why
You can see this amount is not greater than, so you can see the transaction looks normal. Suppose again I will run this application and will give the amount, transaction amount. The transaction amount is 90,000. Okay, I will give the 90,000. What happened? Something happened. Okay, मेरा नाम लॉक था इसलिए 90,000. What happened? Warning. Okay, so warning, high amount transaction. क्या हो रहा है कि तुम्हारा एक कंडीशन मैच हो रहा है, देन तुम्हारा जो अमाउंट है हाई जा रहा है एज कंपेयर टू दिस अमाउंट, एंड देन योर सिस्टम से warning. Okay, system give the warning that is high amount transaction. Okay, this is the first program. यहाँ पे हमने क्या किया है, पब्लिक क्लास डेमो. तो ये फर्स्ट लाइन क्या है हमारा, पब्लिक क्लास डेमो. दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम. पब्लिक इन द सेंस क्या होता है, ये पब्लिक क्या है, कीवर्ड है. पब्लिक क्या है, एक कीवर्ड है. इस कीवर्ड का यूज करके हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो क्लास है पब्लिकली एक्सेसिबल, मीन्स किसी को भी एक्सेस करने दो. दिस क्लास विल एक्सेसिबल फॉर और accessible everywhere. And class in the sense this is the keyword. सेकंड हमारा क्या है, क्लास. तो सेकंड वर्ड क्या है, क्लास है. क्लास क्या है, कीवर्ड है. कीवर्ड जावा में कीवर्ड है. जो मेरा क्लास है उसको मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है, क्लास है जो रिप्रेजेंट करना है उसको क्लास कीवर्ड डिफाइन करना होता है बिफोर नेम ऑफ द क्लास. ओके, बिफोर नेम ऑफ द क्लास. देन तुम्हारा जो नेम है क्लास का उस तरीके से तुम उसको डिफाइन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, ये डेमो क्लास है. एक डेमो क्लास है. क्लास इन द सेंस तुम बोलते हो कि नॉर्मली डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस, ये रियल एंटिटी को डिफाइन करता है. तुम्हारा जो क्लास का नेम होता है रियल एंटिटी को डिफाइन करता है. ओके, रियल एंटिटी इन द सेंस अगर तुम बोलोगे कि तुम्हारा यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉड चेक कर रहे हैं, तो फ्रॉड डिटेक्शन चेकर और फ्रॉड चेकर ये क्लास हम नेम दे सकते हैं. ओके, कोई भी क्लास नेम देख सकते हैं एज लाइक द एंटिटी, एज लाइक द एंटिटी. और ये होगी फर्स्ट लाइन. तो ये बाय डिफॉल्ट कीवर्ड जब हम पढ़ेंगे तो यू कैन सी द कीवर्ड्स. ओके, क्यों डिफाइन किए हैं, तो एक स्टैंडर्ड है, ये हमारा प्रोटोकॉल है. और फर्स्ट लाइन हमें डिफाइन कंपलसरी है कि अगर हम क्लास डिफाइन करते हैं तो हमें क्लास डेमो इस तरीके से डिफाइन करना. डेमो इन द सेंस कि तुम्हारा जो भी क्लास का नेम रहेगा वो तुम डिफाइन करो. सर, इफ यू रिमूव द पब्लिक, अगर हम ये पब्लिक रिमूव करते हैं तो चल जाएगा. लेट्स सी. ओके, अगर हम कोई भी क्लास है उसका अगर पब्लिक कीवर्ड रिमूव करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. इट विल बी बाय डिफॉल्ट कंसिडर एज अ पब्लिक. ओके, तो डिफॉल्ट क्या होता है, वो पब्लिक होता है. तो मोस्ट प्रोबेबली इफ यू वांट यू कैन डिफाइन एज अ पब्लिक, अदरवाइज नो वरी. अगर तुम्हें डिफाइन करना है तो डिफाइन करो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, एज अ पब्लिक क्लास रहेगा. सर, अगर हम क्लास ही निकाल देंगे तो क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा ना जावा को ये क्लास है या क्या है. जावा क्या बोलेगा, पब्लिक डेमो, व्हाट इज दिस. अगर तुम्हें कोई एंटिटी बता नहीं रहा है, तुम्हें कोई भी कुछ भी हाथ में दे रहा है तो तुम्हें वो चीज पता ही नहीं है, तो तुम उसको रखोगे गाइस. कोई भी अगर एंटिटी है तो उसको तुम रख पाओगे तुम्हारे पास, अगर तुम्हें पता ही नहीं है वो क्या है. नो no, मैं तो नहीं रख पाऊंगा. आई डोंट नो फॉर अदर, बट सो दिस विल बी हैपन. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर तुम क्लास उसको डिफाइन नहीं करते हो तो ये तुम्हें एरर थ्रो करेगा, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा.
कि ये चीज जो तुमने कोड लिखा है किस चीज का है, क्लास है या कोई अदर चीज है, तो हमें बताना पड़ेगा ना। अगर हमें हमें हमारी आइडेंटिटी बतानी है तो हम क्या बोलते हैं, हमारा नेम बोलते हैं, राइट। उसके साथ हम क्या है, जो भी हमारा लाइक ये रहेगा एज ए ह्यूमन कंसिडर करेंगे। हम तो खुद को एनिमल नहीं बोल पाएंगे ना, राइट। जो क्लास है तो क्लास, अगर हम ह्यूमन है तो ह्यूमन बोलेंगे, एनिमल को एनिमल ही बोलेंगे। तो ऐसी चीज है यहाँ पे भी, क्लास है तो उसको क्लास डिफाइन करो, ओके, प्रूव करो कि ये क्लास ही है, तो यू शुड हैव टू डिफाइन द क्लास। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन है हमारा पब्लिक स्टैटिक void main, ओके, दिस इज द बिगेस्ट पिक्चर, ओके। ये क्या है, पब्लिक स्टैटिक void main। तो पब्लिक स्टैटिक void main एक स्टेटमेंट है जो मेथड सिग्नेचर है, उसको बोलते हैं मेथड सिग्नेचर। ये क्या है, मेथड सिग्नेचर है। गाइस मैं ऑडिबल? Yes, sir. Yeah. ओके। तो ये क्या है, मेथड सिग्नेचर। मेथड सिग्नेचर, हमने एक मेथड बनाई, कल हमने देखा था सीपीपी में एक ही मेथड थी इंट बोल के, तो उससे हम डायरेक्ट मेन मेथड लिखे थे, लाइक दैट, इंट और मेन मेथड। तो मेथड हमारी एग्जीक्यूट हो रही थी और हमारा प्रोग्राम रन हो रहा था, लाइक दैट। जैसे ही जावा में अगर हम इंट मेन मेथड लिखते हैं तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा क्या, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। यू कैन सी दी एरर, एरर दिख रहा है यहाँ पे, क्या एरर है, शो, लेट मी डिफाइन, क्या है हमारा मेन मेथड है, तो इसको मैं रिटर्न करता हूँ, ओके। अभी तुम्हें समझ में आएगा, रिटर्न 0। अब मेरा एरर चले गया। लेट मी रन द प्रोग्राम, लेट मी रन द प्रोग्राम, लेट्स री रन इट। अब क्या होता है देखिए, अब क्या होता है देखिए, you can see the output, this is the error, main method not found in the class com.web.demo। डेमो क्या है, हमारा क्लास नेम है, और ये क्या है, हमारा पैकेज है। सो पैकेज, डोंट फॉरगेट अबाउट द पैकेज। तो ये क्या है, हमारा डेमो क्लास है। सो प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक void main string array args, स्ट्रिंग एरे आर्क्स। हमें क्या करना है, ये कंपलसरी लिखना है। और जावा एपेक्स एप्लीकेशन क्लास मस्ट एक्सटेंड जावा एपेक्स एप्लीकेशन एप्लीकेशन, करेक्ट। तो अगर हम हमारे क्लास के अंदर मेन मेथड अगर नहीं लिखेंगे तो यू विल बी एबल टू सी दिस एरर, you never execute this application because, okay, because there are some internal philosophy, internal philosophy। Let me revert this, let me revert this, okay। मैं public static void main method उसको रख के एग्जीक्यूट करता हूँ। नाउ आई एम एबल टू रन इट, नाउ आई एम एबल टू रन इट, मैं अभी रन कर पा रहा हूँ। गाइस टेल मी, अगर हम मेन मेथड नहीं लिख रहे, अगर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड नहीं लिख रहे, तो ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, एनीबडी नोज, साहेबा, एनी अदर गाइज, पता है किसी को? ओके, सो I think you should have to talk something, but you're not like interacting some. So no worry about it. अगर तुम interact नहीं करोगे तो will not in like happen the interesting session. Okay, you're learning. Talk something, whatever. Yes or no, we don't know. Whatever it is. Okay, let's continue. तो यहाँ पे
ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है, कंपलसरी लिखना है, बिकॉज हमारा प्रोग्राम कहाँ एग्जीक्यूट होता है, जेवीएम पे। तो जेवीएम के अंदर जो लॉजिक है उसके पास क्या है, ये सिग्नेचर कंपलसरी चाहिए। जेवीएम को अगर कोई भी प्रोग्राम जा एग्जीक्यूट करना है तो वो पहले आइडेंटिफाई करता है ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड वाला सिग्नेचर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड वाला सिग्नेचर। अगर ये नहीं है तो जेवीएम को समझ में नहीं आता है कि मुझे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है नहीं करना है, क्योंकि उसका जो एंट्री पॉइंट है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है। बट राइट नाउ अगर अभी देखोगे तुम तो ये भी मेथड हटा दिया गया है। अभी लेटेस्ट वाले जो भी हमारे जेडीके वर्जन है, जो लेटेस्ट वाले जो वर्जन है उसमें हमें जरूरत नहीं है मेन मेथड की भी। आई विल शो यू लेटर दैट, ओके। बट फर्स्ट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। गाइस, क्लियर टिल नाउ? यहाँ तक क्लियर है? मेन मेथड अगर नहीं है तो नो एंट्री पॉइंट, देन इट डजंट वर्क, ओके। तुम्हारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि हमें कंपलसरी मेन मेथड स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करना होता है, क्योंकि जेवीएम को स्टार्ट करने के लिए। अगर जेवीएम स्टार्ट करना है तो हमें कंपलसरी है। जैसे कि हमारे पास अगर बाइक है या व्हीकल है, तो उसको अगर हमें स्टार्ट करना है तो वी शुड हैव टू स्टार्ट बटन। कोई भी चीज को अगर हमें स्टार्ट करना है तो बटन चाहिए, तभी जाके वो इंजन स्टार्ट होगा। कि हमें तुम्हें लॉक, पहले तो चाबी की चाहिए, की, देन यू शुड हैव टू स्टार्ट। तुम्हारे पास अभी ये तो की है, क्लास तो डिफाइन किया है, बट तुमने बटन ही नहीं रखा स्टार्टिंग पॉइंट, तो क्या तुम्हारी बाइक चालू होगी, व्हीकल स्टार्ट होगी? नहीं होगी। लाइक दैट, दिस इज द की, दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द जेवीएम और जावा प्रोग्राम, ओके। सो यहाँ से ही तुम्हारा क्या होता है, मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है, कंपाइल होता है। अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारा कंपाइलेशन नहीं होगा, मेन मेथड नहीं मिलेगा, देन वोंट वर्क, ओके। मेक सेंस गाइस? मेक सेंस? ऑडिबल? हेलो? Yes, sir. Yes. All are there? Or okay. So, okay. That's it for the today. We will continue the same thing tomorrow onward. If you have any question, queries, okay, we have the QA session right now. So let's start the QA session for 10 minutes. Let's discuss. As हम discuss कर सकते हैं. If you have queries, question, feel free to discuss. Right. No? No, sir. Okay, guys. Then thank you. Thanks for joining. See you in the tomorrow session.